Hi students. So we were talking about the subdivisions of northern plains. So here in this video or in this part of the video series, we are going to study about the subdivisions of the northern plains. So the starting from the north, where because in the north of the northern plains there are the Himalayan mountains, and in the south there are the peninsular plateau. So if we start from the north side of the plains, in this map we can see that if we start from the in this map, the area which is looking quite green, just I am marking it, see area starting from, if we see in the map, almost this area which is some part of the this area up to here. So all this complete area is the northern plains. Almost this area is the part of the northern plains. So in this, the as we told we talked earlier that the northern areas, sorry, western area, this area is the covered by the river Indus. Then in the center, this center part, it is drained, or it this comes under the drainage system of river Ganga. And later in this, if we see in the west, this area is the part of the river Brahmaputra. So if we start dividing these areas, or if we start divide these areas from north to south. So in the north, here this is the here almost this area, which is the where in the foothills of the Himalayan mountains. This comes, or this is known as the Bhabar, or this area is known as the Bhabar. And after that, when the Bhabar ends, the next area that comes, that is that we can take it as the this area, this after Bhabar, this area we can this is known as the Tarai area. This is Tarai area. And after that, there is the alluvial plains, which are further divided into the two subdivisions, Khadar and Bhangar. So the rest of the area which is remained, this complete area, or this complete area, this remaining area, this is known as the Khadar, or this area, sorry, alluvial plains, and it is further divided into the two divisions that we are going to study next. So here are the three divisions of northern plains: the Bhabar, the Tarai, and then the alluvial. So if we talk about the, and this map is the one means from north to south, it is the slice of the map which covers a particular area of the northern plains, complete particular area of the northern plains starting from north to south. So in this we will see the divisions or the subdivisions of these plains. So the first one is the Bhabar, and Bhabar is the narrow belt ranging between 8 to 10 kilometers parallel to the Shivalik foothills at the breakup of the slopes. So when we see the Bhabar, this is the area at the foothills of the Shivalik range, and as we know that Shivalik range is the southmost range of the Himalayan range, Himalayan mountain. So whenever the Shivalik range ends, it comes the northern plains starts. So the area or the belt between at the foothills of the Shivalik mountains is the that belt is the part of the
northern plains, and that is called the Bhabar, or we can say that Bhabar is the joining point or the joining area of the Himalayan mountains and the northern plains. As the result of this, the streams and rivers coming from the mountains deposits heavy material of rocks and boulders, and at time disappears in this zone. As the rivers comes from the higher mountains and from the higher slopes, जैसे mountains ऊंचे ऊंचे slopes से नीचे आती है तो साथ में क्या पता है बड़े बड़े कंकड़ हेवी मटेरियल लेकर आते हैं, जैसे रॉक्स के हेवी मटेरियल्स होते हैं, बोल्डर्स होते हैं मतलब गोल गोल पत्थर होते हैं, मोटे मोटे कई तरह की चीज़ें होती हैं, साथ में वी कैन से कि बड़े बड़े पत्थर साथ में लेके आते हैं। लेकिन जैसे ही उनका स्लोप्स कम होता है, जो पानी के का जो फ्लो कम होता है, तो जो जितना भी हेवी मटेरियल होता है पानी के साथ में वो सारा वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। तो क्योंकि इट इज दीज आर द बिग बोल्डर्स एंड द बिग स्टोन्स, दैट्स व्हाई द वाटर द रिवर सबमर्जेस इनटू दिस एरिया एंड द ऑलमोस्ट in the most of the rivers covered by this area disappears। मतलब नदी शिवालिक से आती हैं, यहाँ पे आके बड़े बड़े पत्थरों को जमा करती हैं, क्योंकि पत्थर वह एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं, उनके बीच के गैप्स फिल नहीं होते हैं, इसलिए जो भी पानी होता है, जो रिवर होती है, वो सारी इसके अंदर डिसअपेयर हो जाती है। इफ यू सी इन द मैप, अगर इसी चीज को हम मैप की हेल्प से समझने की कोशिश करें तो ये यहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया लेते हैं हम, हरिद्वार फॉर एग्जांपल। जैसे ये हरिद्वार है, आपको यहाँ पे ये रिवर दिखेगी, रिवर गंगा, दिस इज रिवर गंगा, जो ये यहाँ से रिवर गंगा आ रही है, ये रिवर गंगा। सो हियर वी कैन से दैट, okay students, so here we are taking the one example of the river Ganga. So we can say that this is the Haridwar. Haridwar is at the, or Rishikesh and Haridwar is in the Bhabar area. We can say that because in the Rishikesh the river Ganga enters into the northern plains, or it comes out from the Shivalik mountains. So in this area, or this particular area, the river or some other parts, suppose these are the Himalayan mountains, this is the complete Himalayan mountain. So river, when the river comes here from the highest in this particular area, it deposits, or it leaves the big stones and the boulders, and because of that the flow of the river, or the water of the river, submerges into these boulders and this disappears. So we can say that the area near the mountains, or this area, this is the Shivalik, or after the Shivalik range, this for example Dehradun and all these Rishikesh and all these are in the Shivalik range. So after them the plains starts, and so the particular area is known as the Bhabar area, and the characteristics of this area is that the river in this area, the rivers deposits the big stones and the boulders and disappear. The water of the river disappears in the boulders and the big, or the big stones. After that is the Tarai region. So if we see in the Tarai region, this Tarai belt is to south of the Bhabar. It is in the first, after just as the mountains ends, there is the Bhabar, and after this the Tarai region, with an approximate width of the 10 to 20 kilometers, when most of the streams and rivers re-emerge without having any properly demarked channel, thereby creating marshy and swampy conditions known as the Tarai. See, this is the area when Bhabar area ends, and in the Bhabar area
most of the river disappears into the boulders. So when it emerges, when the water river re-emerges, and in that area there are no particular channels, or there are no particular channels of the rivers, and it is quite like the marshy land. matlab okay, so when the river re-emerges after the Bhabar, because there is no there is no speed of the flow of the rivers, so water the river is not divided into the channels. मतलब एक particular इसमें नदी की धारा नहीं होती है, वो इट इज इन द वाइड, इट इज इन द स्प्रीड, द रिवर इज स्प्रीडेड, it is not in the particular or the narrow stream. That's why, because the water is spread in the large area and there is no speed of the water, so it creates the marshy land. The area becomes marshy. marshy मतलब कीचड़ वाला एरिया, जो कि बिल्कुल दलदल जैसा एरिया बन जाता है, क्योंकि जहाँ पे रिवर का फ्लो होता है या जहाँ पे अगर स्लोप्स होते तो वहाँ तो रिवर एक पर्टिकुलर चैनल के थ्रू बह के चली जाती हैं, लेकिन इस एरिया के अंदर जो रिवर्स हैं वो फैली हुई होती हैं, उसका कोई पर्टिकुलर चैनल नहीं होता है, इसीलिए इसको तराई रीजन बोलते हैं. तराई अगर इज अ हिंदी वर्ड, जहाँ पे तराई का मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारा पानी इकट्ठा हो रहा है या जिसको बिल्कुल गीला हो रहा है, गीला एरिया जिसको हम तराई, मतलब अगर हिंदी में आप देखें तो वो तराई, तो वो जो गीला एरिया होता है, तो ये क्या होता है, लैंड का जो पर्टिकुलर लैंड मास है या जो उस जगह का रिवर का जो एरिया है वो पूरा पानी से भरा हुआ होता है. जो वहाँ का जो मिट्टी होती है वो पर्टिकुलर सीजन में या मोस्ट ऑफ द अराउंड द ईयर इट इज फुल ऑफ द वाटर. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द तराई. दिस हैज द लग्जरियस ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड हाउसेज a variety of wildlife, and because of the good amount of the water, because of the alluvial deposits and the fertility of the soil, this area is rich in natural vegetation. जो इस एरिया के अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में वेजिटेशन होता है, अच्छे जंगल होते हैं, वाइल्ड लाइफ होती है. तो वी कैन से दैट इन दिस Corbett Gym Park and some other areas, just after the means when the mountains ends after the 10 to 15 kilometers, there are the Tarai region. After Tarai region there is the Bhangar and Khadar, which are the subdivisions of alluvial plains. So the south of the Tarai is the belt consisting of the old and new deposits known as the Bhangar and the Khadar respectively. जो तराई रीजन के बाद में, जहाँ पे मतलब नदी का पानी बिल्कुल जो तराई रीजन जहाँ पे बहुत सारा पानी इकट्ठा है, उसके बाद का जो एरिया है दैट इज द मिक्स ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू डिपोजिट्स ऑफ द एलुवियल सोइल. जो इस एरिया के अंदर क्या होता है, एक तो पुराना डिपॉजिट्स है, एक नया डिपॉजिट्स है. एक तो मतलब जो बहुत पहले से बहुत पुराना डिपॉजिट, या मतलब जब उस एरिया में डिपॉजिट्स ओनली जब होता है जब या तो बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है या जो बहुत पहले जब फॉर्मेशन के टाइम का डिपॉजिट था. तो consist of the old and new alluvial deposits known as the Bhangar and the Khadar respectively. So the deposit the old deposits of alluvial soil is known as the Bhangar, and then the new deposits of the soil or the alluvial soil is known as the Khadar. मतलब जो पुराना डिपॉजिट्स वाले प्लेन्स है उनको तो हम भांगर बोलते हैं, और जो नए डिपॉजिट्स जो रिवर्स के द्वारा लाया जाता है, या जो हम कह सकते हैं कि जस्ट तराई के बाद में कुछ एरियाज के अंदर रिवर्स का जो स्प्रीड होता है रेनी सीजन में या जब फ्लड के टाइम पे, तो वहाँ पे न्यू डिपॉजिट्स, रिवर्स का न्यू डिपॉजिट होता है. तो जो न्यू डिपॉजिट्स वाले एरियाज हैं हम कह सकते हैं दे आर क्लोज टू द रिवर बैंक्स, दोज आर नोन एज द खादर एंड the
Yes, new deposits are known as the khadar, and the old deposits of the soil known as the bhangar. These plains have characteristic features of mature stage of fluvial erosions and fluvial erosions and depositional landforms such as the sandbars, meanders, oxbow lake and the braided channels. So जो इस एरिया का जो ये वाले एरियाज है इनके अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो नदी के द्वारा बनाए हुए हैं. दोज स्ट्रक्चर्स आर द fluvial erosions, means in some areas the land is eroded, मतलब कुछ एरियाज के अंदर तो रिवर्स की जो चैनल्स है वहां से लैंड को काटा हुआ है. सम एरियाज हैज द डिपोजिट्स ऑफ द एलुवियल, सो डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स, मतलब जो इस एरिया का जो फीचर्स है. सम एरियाज आर द इरोडेड, मतलब कुछ तो नदी के पानी के द्वारा काटे गए हैं, किसी जगह पे डिपोजिशन हो रहा है. एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ द बार्स, मतलब लंबी लंबी पट्टियां लैंड फॉर्म्स की. जैसे नदी बह रही है तो दोनों तरफ नदी बह रही है और उसके बीच में लैंड का डिपोजिशन है, दो तरफ से कटा हुआ है और बीच में से या कोई पर्टिकुलर एरियाज में जमा हो रहा है. एंड meanders means the teddy-medi rivers. In some areas the rivers are in the bending way. Oxbow lakes बीच बीच में नदी के बीच रिवर्स बनी हुई है. एंड ब्रेडेड चैनल्स, और मतलब ब्रेडेड चैनल्स मतलब एक ही रिवर्स के कई सारी धाराएं में. द रिवर्स इज डिवाइडेड इनटू द मेनी चैनल्स और द इन द मेनी स्ट्रीम्स. दैट इज द these are the features of this area.